Hello, everyone, and welcome to the SBI Securities Weekly Wrap podcast. So, first, let's discuss how the markets have been in the week gone by. Indian benchmark indices ended marginally higher for the second consecutive week amid heightened volatility and numerous market moving events such as Union Budget, RBI monetary policy outcome, US China trade war, and the 3Q FY25 result season. अगर इस हफ्ते की बात की जाए निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी 500 ऊपरी स्तर पर बंद हुए बाय 0.3%, 0.2% एंड 0.3% वीक ऑन वीक। सेक्टर की बात की जाए बीएसई हेल्थ केयर, मेटल्स, आईटी और बैंकेक्स भी ऊपरी स्तर पर बंद हुए बाय 3.1%, 2.7%, 1.9% एंड 1% वीक ऑन वीक, while FMCG, reality, capital goods and power declined by 5.2%, 3.5%, 2.4% and 1.8% respectively. For the week, FI's net sold equities worth rupees 11,045 crores, while DI's net bought rupees 7,274 crores in the cash market, and this data includes the data of 1st February as well. The outcome of the Union Budget 25-26 was favorable, broadly focusing on growth and consumption. After a brief period of lull in government capex during FY25 on account of election and above normal monsoon, the government hiked the FY26 capex to rupees 11.2 trillion. Additionally, in a significant move to boost urban consumption, the government rejigged the income tax slabs under the new tax regime with no tax payable on income up to rupees 12 lakh for the salaried individuals. The favorable budget outcome was partially overshadowed by imposition of new set of tariff on Mexico, China and Canada by the Trump administration, leading to fear of low economic growth in US accompanied with high inflation. The tariff on Canada and Mexico, however, were postponed by a month, providing some respite in global equities including India. The result season is ongoing and the earnings so far are muted. Total 1,264 companies, excluding banks and NBFCs, has posted just 4.8% YOY growth in revenue, while profit improved by 17.6% YOY. If we exclude the companies having volatile earnings, for example OMCs, cement, steel, mining or companies with exceptional gains, the net profit in reality declined by 10.7% YOY and 5.4% QOQ for 1,244 companies. RBI's 25 basis repo rate cut on Friday, delivered after a gap of 5 years, failed to bring cheer to the markets. However, we believe that the income tax relief for salaried class in the budget coupled with the interest rate cut are positive for the economy and markets. Aspects to look out during the next week. So next week, the 3Q FY25 earnings season will draw to a close and a market will start focusing on the economic and global cues. India and US CPI along with jobs data from US January 25 non-farm payrolls are to be released on 7 Feb, which will be key developments to be watched. Additionally, market will also react to the Delhi Assembly election results on Monday. Markets will also keep one eye on any comments or actions by US President Donald Trump on the economy and geopolitics. PM Modi is scheduled to visit USA next week on Feb 12th and 13th, where he will be interacting with President Trump as well as senior US officials. These meetings too will be tracked closely for any potential announcement. We continue to advise our investors to stick with quality large cap stocks during such high times of volatility. अब चलते हैं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की ओर. सो फर्स्ट वी हैव इज जोमैटो. सो इस कंपनी की बोर्ड ने अनुमति दे दी है टू चेंज इट्स नेम फ्रॉम जोमैटो टू इटर्नल, और इटर्नल विल कंप्राइज ऑफ 4 businesses: Zomato, Blinkit, District and Hyperpure. The brand name of the food delivery app will continue to remain as Zomato. So positive for Zomato in long term. ITC. इस कंपनी ने एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ 100% ऑफ शेयर्स ऑफ कैपिटल ऑफ एम्पल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मीट एंड स्पाइस प्राइवेट लिमिटेड एग्जीक्यूट किया है. और जो ये कंपनी है वो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग रेडी टू कुक स्नैक्स एंड मील्स, मीट, सॉसेस, चीज एंड फ्रोजन फूड्स. सो पॉजिटिव फॉर ITC इन लॉन्ग टर्म. इंडस टावर. सो इस कंपनी की बोर्ड ने अनुमति दे दी है टू अक्वायर 16,100 टेलीकॉम टावर्स फ्रॉम भारती एयरटेल एंड भारती एक्साकॉम with a total payment of rupees 3,309 crores for the towers. So positive for Indus Tower in long term. NLC India. So NLC India emerge हुई है as the successful bidder for a coal mine at Angul, Odisha.
जिसका टोटल जियोलॉजिकल रिजर्व है ऑफ 720.87 मिलियन टन्स। आज़ाद इंजीनियरिंग, ये कंपनी ने एंटर किया है एक लॉन्ग टर्म पैक्ट with Rolls-Royce UK for manufacturing and supplying civil aircraft engine components for the entire life cycle of the engine. So positive for Azad Engineering in long term. Ultratech Cement. So इस कंपनी ने कमीशन किया है एडिशनल 0.6 मिलियन टन्स पर एनम ग्राइंडिंग कैपेसिटी at its existing unit in Sonar, Bangla, West Bengal. And this additional capacity will service cement demand in the East India region. So positive for Ultratech Cement in long term. अब बात करते हैं कि ये हफ्ते कौन कौन सी कंपनी को ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं। तो पहला है लार्सन एंड टूब्रो, जहाँ इस कंपनी को करीब 5,000 to 10,000 करोड़ की ऑर्डर्स रिसीव हुई है फ्रॉम इंटरनेशनल क्लाइंट। सो पॉजिटिव फॉर द कंपनी इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। सोलार इंडस्ट्रीज, सो इस कंपनी को 6,084 करोड़ की ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिली है। सो पॉजिटिव फॉर द कंपनी। स्वान एनर्जी, सो इस कंपनी को 111 करोड़ की ऑर्डर फ्रॉम अग्नियस्त्र टेक्नियन प्राइवेट लिमिटेड से ऑर्डर प्राप्त हुई है। सो पॉजिटिव फॉर स्वान एनर्जी। इंजीनियर्स इंडिया की बात करें तो इन्हें एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है ऑफ 1200 करोड़ फ्रॉम इस डोमेस्टिक क्लाइंट। सो पॉजिटिव फॉर इंजीनियर्स इंडिया इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, सो बीएमसी से इन्हें 291 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। सो पॉजिटिव फॉर वेल्सपन एंटरप्राइजेस इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। जेंसल इंजीनियरिंग की बात करें तो इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है of 968 crores from a domestic client. So positive for the company in short to medium term. So for corporate actions for next week, so for key corporate actions in next week, kindly refer to our weekly wrap report. The link to view the report is shared in the description box below. So this was all about the weekly market podcast. Thank you for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.